always like, say if I'm sitting here but I'm thinking about something else, or I'm doing a film with him but I'm thinking about Brad Pitt. I mean, like, you know what I mean? It's like, आपका कंपैरिजन ब्रैड पिट से हुआ है. he's better. He's better. I thought it must be George Clooney, but anyway. ये जो spirituality, divinity, mysticism शुरू पता कब होता है? जब आप कामयाब हो जाते हैं. साडी खूबी है ਅਸੀਂ ਰੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲਾਂ ਦਿਆਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੁਣ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘਰ ਬਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ ਕਿ ਇਸੇ ਗੁਣ ਸਦਕਾ ਖੁਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. If you find true love, that man would only hold you up on a pedestal and say, shine bright, baby. Welcome, Sartaj ji, Neeru ji, to After Hours with All About Eve. Thank you. It's such a privilege to be with such stalwarts. So thank you हमारे साथ थोड़ा सा time spend करने के लिए. Thank you. Thank you for having us. Thank you very much. मैंने आप दोनों का करियर काफ़ी हद तक फॉलो किया बिकॉज आई एम ऑल्सो पंजाबी एंड चाहे वो म्यूज़िक हो या मूवीज़ हो, आई थिंक दोनों में यू नो आप इतने बड़े स्टार्स हैं. बट आई थिंक व्हेन आई यू नो व्हेन वी रियलाइज दैट वी आर गोइंग टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद द बोथ ऑफ यू टुगेदर, तो हमने सोचा कि आप दोनों में एक कॉमन फैक्टर ये है कि एक तो आपके लॉन्ग स्टैंडिंग करियर्स रहे हैं. You know, you finished 20 years, if I'm not mistaken. Yes. And also that, you know, you've kind of maneuvered your way on your own. How do you feel today, both of you? Honestly, it doesn't feel like it's been 20 years. I feel like it was just yesterday that I came and I did my first film. But it's been a beautiful experience, and I've met so many amazing people along the way, some not so amazing people, but just to see the growth of Punjabi cinema, because I've been attached with it from day one, has been the most rewarding for me. I'm not asking who the not so amazing people are, but what were the not so amazing experiences? It just nothing too controversial or interesting. It's just you get along with some people you don't. Right? Nothing like that. Everyone's amazing. It's just we're all different. So sometimes you vibe and sometimes you don't vibe. And this is a vibe. I think so, yeah. That's why we've done a second film together. आप बताइए सरताज जी, आज कैसे फील कर रहे हो आप? बहुत उम्दा. As I said initially, content, as always, most of the time. And I think that's my happiness, that's my joy, being satisfied, and not, as she is very, sometimes, I know majority of the time, she is very exuberant, nervous as well, equally. I am slightly not, actually exactly opposite. Calm. Most of the time. So, but I get some exuberance from her, and she probably is getting some calmness from me somehow. So this works. The vibe works. Yin and yang. So yeah, it was a beautiful journey, and I am very grateful to my admirers particularly, and feeling a more sort of responsibility for them. That's the thing, I think. But how do you stay content? आपने बोला you're feeling content. Yeah. But in this kind of a space which is competitive, you cannot try, or you cannot be content. You are content or you are not content. That's the actual real meaning of being content. You cannot try to be content. You will naturally be content. This is what I think. Is that so? Is that not something that we can work towards, contentment? Do you feel content, Neeru ji? I definitely feel content, but there's a lot that I want to do also. But if I'm at home and I say I'm not shooting and I don't have a project planned for the next couple of months, I don't sit there with anxiety. This used to happen to me in my younger days, when I'd be like, oh, okay, aa film kar li, hun next ki karange, next ki karange, next ki karange. But now I'm like, I'm content and happy with what I'm doing, and I live in the moment. I think I've been able to maneuver myself to that point, at least, where I'm very happy in the space that I am, and I'm very happy being who I am.
I'm not trying to be somebody else. I'm not trying to portray anything else. I'm very comfortable in my own skin at the age that I have reached. And it took these many years to get to It that took stage? these many years. Yeah, it took bloody 40 years. But Sartaaj is content since forever. That's just his vibe. No, what she just said, it is very much right. You can be content and exuberant at the same time, and like having dreams and having desires, having जिसको आप मंजिल बोलते हैं, बिल्कुल. तो वो होती हैं, होनी चाहिए, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है. मतलब मेरा ये कहना है कि सारा कुछ ख्वाब हों, ख्वाहिशें हों, लेकिन उसके साथ इत्मीनान भी हो, तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा And not enjoying what you're actually doing. And always like, say if I'm sitting here but I'm thinking about something else, or I'm doing a film with him but I'm thinking about Brad Pitt. I mean, like, you know what I mean? It's like, आपका कंपैरिजन ब्रैड पिट से हुआ है. he's better. He's better. I thought it must be George Clooney, but anyway. I'm just joking. I was No, at this seriously, meditation retreat अभी. हाँ जी बताइए. Sorry, once someone said like any film which you would prefer to be in. I said Curious Case of Benjamin Button, so that's Brad Pitt's film. So it's perfectly fine. See, it's a vibe. But so I was saying I was at this meditation retreat, and there was this line, speaking of contentment, which they said कि जितना सामान बटोरा है तुमने, उतना सुकून बटोरा है क्या? अच्छा. You know कि हम लोग इतने रश में होते हैं to achieve, especially 20s में, early 30s में. तो आपने जैसे बोला 40s में आके वो फीलिंग लाइक यू नो आई एम नाउ कंटेंट. तो यू नो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम उतना इत्मीनान और उतना सुकून भी बटोर रहे हैं क्या जितना सामान बटोर रहे हैं. मेरा एक गाना है, उसका आखिरी शेर है कि खुद फुर्सतों ने मिलाया इत्मीनान से, तहम्मुल सुकून खड़े देखे हैं हैरान से, हाँ करके दीदार बढ़ा एतबार सरताज का, तो अल्लाह में शगुफ्ता दिली तुम्ही से मिली, अजब कैफियत है निगाह में, ये मोहब्बतें जुनून लज़्ज़तें खुमारी है तेरी पनाह. वाह. तो जितने सिनोनिम हैं सुकून के वो सारे इस्तेमाल हो गए हैं एक स्टैंडर्ड में. सो आई थिंक दैट्स वर्दी. वाह वाह. बट तो आप बोल रहे हो कि हम सुकून पा सकते हैं और पाना भी चाहिए. तो मैं थोड़ा उसको प्रिसाइज करके बोलने की कोशिश करता हूँ. देखिए इस जहान में मार्क्सिज्म भी एग्जिस्ट करता है जी, कम्युनिज्म भी एग्जिस्ट करता है, स्पिरिचुअलिटी भी एग्जिस्ट करती है, डिविनिटी भी एग्जिस्ट करती है, मिस्टिसिज्म भी एग्जिस्ट करता है. तो आप अगर ये कहेंगे कि ये ही ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये जायज़ सी बात है, जायज़ बात नहीं है. जिनको कम्युनिज्म पसंद है उनके लिए स्पिरिचुअलिटी मेरे ख्याल से थोड़ी लेस इम्पोर्टेंट होगी. तो आपको बेसिकली बैलेंस करना होता है सारी चीज़ों में, एस्पिरेशंस और कंटेंटमेंट को. यस. सो सिर्फ एक चीज़ काफ़ी नहीं होती ज़िंदगी में, सारे रंग होने चाहिए, लेकिन उनका एक अप्रोप्रिएट अमाउंट होना चाहिए. सो दैट्स व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ इज. I agree. That's an aspirational like state also to be in, where you have dreams and aspirations, but also you are happy where you are. That's what actually matters. Most probably. जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं ज़िंदगी में, जैसे ये हैं, अब इन्होंने फील किया कि मैं जो हूँ, अब ये ज़्यादा खुश हैं अपनी इनिशियल डे से, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, Personally and professionally, yeah. एंड इन एवरी पर्सपेक्टिव प्रोबेबली. सो आई थिंक ये जो स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी, मिस्टिसिज्म शुरू पता कब होता है? जब आप कामयाब हो जाते हैं. इससे पहले रोटी रिज़्क़ के बहाने की बात होती है. तो आप उसको वो नहीं कर सकते, मतलब इस चीज़ को ऐसे डिनाई नहीं कर सकते कि अच्छा यार यही कंटेंटमेंट ही सारा कुछ होता है. नहीं. सबसे पहले जब आप सड़क पे बैठे बच्चों को देखते हो, उनकी माँ सड़क पे काम कर रही है, उनके लिए स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं है जी. उनके लिए शाम के खाने की सबसे बड़ी बात है. तो ये जर्नी है एक. ये ज़रूर है कि जब आप कामयाब हो जाएं तब आप ऐसी बातें ज़रूर सोचें, क्योंकि आप इस काबिल हैं, सोच सकते हैं. जैसे एक बड़ी कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट है आचार्य रजनीश की कि अच्छा मैं अमीरों का गुरु हूँ. अब ये बड़ी ऑड सी स्टेटमेंट है, लेकिन उनको ये पता था कि जब ये अमीर लोग सारी दौलत शोहरत देख लेंगे, फिर इनको पता चलेगा कि स्पिरिचुअलिटी या डिविनिटी क्या चीज़ होती है. उसके बाद ये इनकी जर्नी शुरू होती है. तो ये दिस इज अ जर्नी. सो दिस इज माय थॉट अबाउट इट. That's a very, very well said point. Neeru ji, do you feel you're spiritual as a person?
I think I am. I mean, I don't. It's She's hard very, for me to. it's very religious also. Yeah, I'm very religious also, but I don't. I don't. I'm not one to like put my thoughts on anyone. I do genuinely listen to people, and I think I have this motto that live and let live. Like I have no judgment on people. There's nothing for me is right or wrong. Like I don't think anyone's way of living, or the way they handle themselves is right or wrong. It's their journey. It's what they believe is right for them. So whatever I'm doing is right for me. So I don't appreciate when people try to force their opinions on you, want to lead you a certain way, because I think everyone has their own journey and you should let them find their way. What led you to your spiritual path, to your religious path? Oh, my spiritual path, my religious path. Well, I've always been religious from day one. I've always prayed at night before going to sleep. I wake up being grateful, and even when anything bad happens or negative happens in my life, I believe that that's God's plan for me. And there's that saying that says that He puts you through the thorns to put you on the throne. So I do believe in that. And I don't question anything bad that happens in my life either. So I learn from it and I move on. Yeah. Is there any specific God that you pray to? Vaheguru. Babaji. Yes. आप कंटेनमेंट की आप बात कर रहे थे, मेरा थोड़ा सा उसमें एक मुझे याद आई है बात कि कैसे हो सकती है बिल्कुल डिफीट में भी। तो मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैंने अभी दिल्ली गए थे तो मैंने किसी को सुनाया तो अभी ख्याल आ गया, मालूम क्यों कैसे, कि मुतमईन हैं शिकस्तों से हम उदास नहीं, कि आई एम वेरी कंटेंट विद द डिफीट्स, आई एम नॉट सैड। करेक्ट। मुतमईन हैं शिकस्तों से हम उदास नहीं, ये हुनर भी तो वैसे हर किसी के पास नहीं। वाह। जिसने देखा हो एक जलजला निगाहों से, जिसने अफसाने बुने हो दहकती आहों से, कैसे कहिए कि उसे दर्द का एहसास नहीं। मुतमईन है शिकस्तों से हम उदास नहीं, ये हुनर भी तो वैसे हर किसी के पास नहीं। बिल्कुल। तो यू कैन बी एनीवे। दैट्स ब्यूटीफुल। इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, हमको शायरी की तो बात करनी पड़ेगी क्योंकि we can't not have this conversation, है ना? All that talk right here. उस्ताद जी all that conversation right here. तो एक पिक्चर आ रही है, उसका एक डायलॉग है कि शायर जो होते हैं वो झूठे होते हैं। थोड़ा इलैबोरेट करेंगे आप दोनों इस बात पे? मैं नहीं करूँगा क्योंकि I am not झूठा। Exactly. I think why it's been said, it's in the film. There's, I know. But he's not. He's very. I can only speak about him. I only know him. This one shair I've gotten to know, and I think he's the most honest person that I've met. And whenever it comes through to his writings and his performance and everything, so I do find him. आप इतना अच्छा लिखते कैसे हो? कहाँ से आती है इंस्पिरेशन? इधर से। Thank you. We have to praise each other. Obviously, we do praise each other. We adore each other. But that question is, शायर झूठे होंदे, actually Jagdeep Varding, the writer of the film, he wrote this probably to put some spark in the conversation somehow, or like elaborate the emotions, probably, or just weave the thing to go further. That probably was the only thing he thought Well, it's about. like they always say, like, how do you know if an actor is telling you the truth? Right? They do. People ask that. Yeah. It's like, my husband says it sometimes, well, how do I know you're telling me the truth in the beginning? But ये एक misconception होती है कि मतलब जो बहुत मीठी बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, उन पे 1000%। हाँ, कि उन पे थोड़ा विश्वास करना मुश्किल ही होता है। मैं आपको थोड़ी अर्थली बातें बताता हूँ। हाँ। फर्ज करिए कोई भी चीज़ मैं कह लूँ कि मुझे कोई कार पसंद है, मुझे कार से मोहब्बत है या चाहिए, या उससे मुझे बेनिफिट होगा, पैसों से नहीं। लेकिन पैसों से ही कार मिलती है, इसलिए पैसों की अहमियत है। लेकिन जनरली आपकी जिंदगी में अहमियत कार की ही है, वही आपको कहीं लेके जाएगी। पैसा मीन्स हो गया। हाँ, तो ये चीज़ें अभी जो मैं अपने दोस्त के साथ मैंने ये कन्वर्सेशन की थी, पहली बार जिंदगी में ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों। आप बाद में हो सके तो काट भी देना। नहीं, मैं तो पक्का रखूंगी। तो उसको अब समझ आई कि यार कि अच्छा ये ऐसा ही है। हम लोग कब से इकट्ठे हैं, मतलब मास्टर डिग्री से इकट्ठे थे तकरीबन 20 साल से। तो ये होता है, मतलब कि जो आपने कहा ना कि जो ज़्यादा मीठे होते हैं उन पे एतबार कम होता है, ये जनरलाइज्ड
फिनोमिना है, इसमें Correct. कुछ गलत नहीं है, लेकिन exceptionals are always So you are ज़्यादा मीठा, is that what you're saying? No, no, He's people the think मीठा that- was the exception, crux he of the says. story? No, people think कि अच्छा मैं polite ही रहता हूँ, अच्छा, किसी को okay. शोर से नहीं बोलता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुरा हूँ. Okay. That's what I'm saying. और आप बोल रहे हो कि आपकी प्रोफंडिटी जो है वो बाद में लोगों को समझ आई जब बहुत है। कंसिस्टेंसी दिखी उनको देखिए. कि झूठ नहीं बोल रहा है. हाँ, actually. One thing I wanted to ask you was कि आप इतना टूर करते हो, you don't stay here, you know, I'm back and forth. you go back and forth. What is the feeling of home for both of you? Is it a person? Is it a place? Is it just how you feel within? घर की feeling क्या है? I would initiate for the first answer. मैंने ज़िंदगी में कभी अपने लिए चीज़ें नहीं खरीदी, जैसे लोग शॉपिंग करते हैं ना, क्लोथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मैं जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ घर के लिए चीज़ें खरीदता हूँ. अच्छा, कोई स्विट्ज़रलैंड का कोई घोड़ा होगा तो मैं कहूँगा ये मेरे गार्डन में लगेगा. कोई बैल होगी, मैं कहूँगा ये इस दरवाजे पे लगेगी. कुछ विंचिम्स होंगे कहीं से, बाली से या कुछ. तो एक मतलब प्रॉपर ब्रीफकेसेस मेरे उस चीज़ के होते हैं. अगर मैंने ज़िंदगी में मतलब मेरी एक वो फ्रीडम हो कि क्या खरीदना है, तो मैं सारी दुनिया में घर खरीदूँ. मुझे डबलिन में कैसल लेने की बड़ी ख्वाहिश है. वाह. तो आई हैव फार्म हाउस जहाँ पे मैं जाता हूँ, खुद रंग करता हूँ. घर पे भी जब मैं मेरी कथारसिस या कह लो कि रिलैक्सेशन इज जब घर पे मिस्त्री काम कर रहे होते हैं, दैट इज़ माई मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग. मैं उनके साथ बैठता हूँ, कैसे काम करते हैं, किसी को वो प्लास पकड़ा दिया, किसी को पेचकस पकड़ा दिया, वुडन वर्क कैसे आर्टिस्टिकली वो करते हैं, रंग कैसे बनाते हैं जोड़ जोड़ के. तो We seem to have that in common. Is it? Well, okay. मतलब घर बनाने के लिए I'm passionate about the feeling that people get from that, ना? Yeah, I never enjoy commercial things like कि अच्छा यार कि वहाँ आपका कोई शोरूम है तो मैं कभी नहीं जाता. लेकिन अब 2 घंटे के वक्फे पे आपका कोई फार्म हाउस है तो अगर मेरे पास टाइम है तो मैं खुद अकेला भी गाड़ी पका के चले जाता. तो हर जगह है आपके लिए. हाँ जी. हाँ, एक फिरदौस है हमारे घर का नाम. तो फिरदौस मीन्स पैराडाइज. तो मेरे लिए घर एक स्वर्ग जैसे मेरे ख्याल फिल्म का भी नाम है, आई थिंक. What is the feeling of home for you? Peace. I would say that we just went on a trip, the whole family, but as soon as we came home, we dropped our bags and we're like, oh, it's so good to be home. It's just this feeling of like home. And obviously I'm blessed because I have a happy home. You could have a beautiful mansion, but if, people inside that, I would call that a house, are not happy, or, are fighting with each other, or have different lives, I think that would be unfortunate. But fortunately for me, we have a beautiful home where our children are happy. Thankfully, we love each other and we have our mother with us. So, yeah. पर जब आप इतना travel करते हो तो फिर do you feel decentered? यूं तो आलीशान इमारत में भी सोते रहते हैं, दौलतमंद अमीर बात ये सब आखिर में कहते हैं. उम्दा कमरे हर एक शख्स किराए पे ले सकता है. 4 दीवारी होने में और घर होने में फ़र्क है. बेहतर बातें करने और बेहतर होने में फ़र्क है. ज़र की सिर्फ चमक रखने और ज़र होने में फ़र्क है. तो 4 दीवारी जैसे उन्होंने कहा कि सिर्फ एक अच्छी बिल्डिंग होने से घर नहीं हो जाता, उसको होम बनाना पड़ता है. वो आपके क्या कहते हैं परिवार वालों से, मोहब्बत करने वालों से बनता है. तो उनसे दूर रह के फिर आप मिस तो करते ही होगे? नहीं करती. Obviously I miss them, but it's just that's just our life, and I have such an amazing support system that no one makes me feel bad for what I do, which is so important for working women. Yeah, and if I feel bad, my husband will be like, don't worry, you're going to come back and take care of these brats anyways in a couple of days, so just enjoy it. Go have a glass of wine. So I usually feel guilty, but it's them who take that guilt away from me. But of course we miss each other, and then we look forward to seeing each other. We plan things, what we're going to do as soon as I get there. So it's just, but that's just the way our life is, and I'm very grateful for the way our life is. What's your favorite wine? You've mentioned this in a couple of interviews. I saw that you like your research. Well, it depends on my mood. Yeah. So tell us, if it's been a long day at work, what would be your choice? So
I'm into sugar-free ones back home, so lucky that we have keto ones back home. But otherwise, it's depends on the weather. I'm going to sound like an alcoholic. If it's cold, I'd like a glass of red wine. I'm having Italian food, red wine. Otherwise, rosé or French champagne, obviously. But are you more like a heavy-bodied Merlot kind of person? No, I'm a Chianti? Pinot Noir. Ah, same. Yes, yeah. I do like a good Chianti though with my Italian food. आप मैं ये नहीं पूछूंगी आपसे वाइन के बारे में क्या दूध पी लिया जी ओट में almond milk soya milk yeah देसी I'm a teetotal. नो आई नो अगर आपको किसी लेमैन को समझाना हो अपनी आर्ट हु इज अ सूफी म्यूजिक क्या होता है? सूफी म्यूजिक नहीं होता, सूफी ख्याल है, थॉट है. ठीक है. म्यूजिक सारे सेम होते हैं, नोट्स 12 ही हैं. इंग्लिश म्यूजिक में भी तसव्वुफ में भी कहाँ भी उसकी यूजिंग मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने पूरा धनासरी बनाया तो सा से यहाँ चले गए, गुजरी तोड़ी बनाना है तो धैवत से मध्यम से आकर ऋषभ कोमल लगा लिया. सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है रागदारी का. तो जब तक तसव्वुफ का ख्याल नहीं है उसमें, मतलब पोइट्री नहीं है. जब जो मेरी डॉक्टरेट का सब्जेक्ट था, टाइटल था, उसमें लिटरेचर पहले, हालांकि डिपार्टमेंट में ना म्यूज़िक था, म्यूज़िक पर्सपेक्टिव से रिसर्च होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें इनिशिएटिव फर्स्ट लिटरेचर का है, देन म्यूजिकोलॉजी का है. तो मेरे हिसाब से जब तक तसव्वुफ का ख्याल पोइटिकली वहाँ नहीं आता, सूफी म्यूज़िक नहीं हो सकता. ये मेरा मानना है. लेकिन उसमें ये ज़रूर है कि जैसे मुझे किसी ने, एक ईरानियन म्यूजिशियन ने मुझे वो एक डफ तोहफे के तौर पे दे दी, तो उसको आप सूफीज़म का एक एलिमेंट मानते हैं कि अच्छा उसमें एक वजद की खुमारी है, जब वो बजाते हो तो उसमें कैफियत आती है. जो वॉलिंग दरवेशेस हैं मौलाना रूमी के, स्टेट्स तक उनके फेस्टिवल होते हैं. तो वो एक बना हुआ है फिनोमेना कि सूफी म्यूज़िक ये होता है जिसमें थोड़ी कैफियत हो, जिसमें थोड़ी रंगत हो, जिसमें थोड़ा सुरूर हो, जिसमें समा बन जाए. तो हाँ, उस तरह से आप कहो तो जितना भी सूफी म्यूज़िक आप सुनते हो वो सूफी म्यूज़िक ही है. जहाँ पे भी आपने ऐसे करके किया कुछ तो मिस्टिसिज्म आ गया. लेकिन अगर आपको ख्याल नहीं है, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक के सफ़र की वाकफियत नहीं है, तो फिर मायना कुछ नहीं है. ये थोड़े सिंपल वर्ड्स में अब आप समझाओ. सिंपल वर्ड. अच्छा इश्क अच्छा, I thought you were understanding. I'm pretending to understand and I'm dying. Oh my God. इससे आसान. अच्छा, इश्क मजाजी होता है ये जो आम इश्क है आपका, जिसको आपको कोई महबूब दिखा, आपको उससे मोहब्बत, रोमांटिक जो हम बोलते हैं, हाँ, दी ह्यूमन लाइफ. हाँ. लेकिन उसी महबूब को आप धीरे धीरे वो आपका रहबर हो जाए, धीरे धीरे वो आपका मुर्शिद हो जाए, धीरे धीरे वही आपका खुदा हो जाए. इसको कहते हैं मिजाज से हकीकत तक का सफ़र. जो आपने कहा, सुना होगा कि रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आप पे रांझा हुई, काफ़ी है. गुरबानी में भी ऐसी चीज़ें हैं और तकरीबन यही फिनोमेना रहा है जितने भी प्रोफाउंड सूफ़ी हुए हैं, चाहे गॉड इज़ लव. हाँ जी, चाहे वो हज़रत अमीर खुसरो हैं, चाहे बख्तियार काकी हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, चाहे हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पे आप जाते हैं, जितनी भी कवालियाँ सुनती हैं वो इसी फिनोमेना के ऊपर बेस्ड होती हैं. तो दुनियावी मोहब्बत से डिवाइन मोहब्बत तक का सफ़र इज सूफीज़म. नीरू जी, सरताजी just said God is love. What is the meaning of love for you? No. What is the meaning? Well, I've been asked this question so many times during promotions that I have come up with something. And I do believe that love is unconditional. Really? Really. I do think that it's quite impossible, but... I actually think it's impossible. I think the only unconditional love that exists is between like a parent and child. Not even. Not even? Even our parents have so many conditions. You still believe it's unconditional? I'd like to believe that love is unconditional, and but I do believe that when someone, especially for girls, if a man truly loves you, if we're talking about that kind of love, they won't want to change you. They would want, and you shouldn't change for anyone. So I'm just like, love is so vast. I mean, there's so many different kinds of loves. But I often see young women changing themselves for a man, and they believe that he loves them, or no, he's molding you, and he is an insecure prick. So you please, all girls that are watching me, you should not have to change yourself for anyone. If you're an independent working woman, he should be secure enough to handle that. Otherwise, please, because a lot of women try to dim their light,
and not be so loud and not shine in a bright room, because some insecure men would appreciate that. So I think that, you know, if you find true love, that man would only hold you up on a pedestal and say, shine bright, baby. So that's what I think. That's very important, actually. I think, especially as you said, rightly for young women, because I think we're conditioned to believe that it's not always important. like, you know, why do they say, oh, you know, she laughs and plays at her father's house, and then when she goes to her husband's house, she's a completely different human being, where she's so docile, quiet, and watches what she says, doesn't laugh too loudly. So I pray that every woman finds someone that really celebrates her individuality. I agree. I couldn't agree more. But you know, speaking of things that bring us joy or what is important, maneuvering your career along with the family, how have you kind of managed to do that? I'm sure it's not been easy. I would say probably in the first couple of years, because my husband is not from the industry, it's probably a little difficult for him. I mean, I think it's you know, being an actor, if you're a non-actor and your husband or wife is an actor, an actress, you know, you're romancing heroes, heroines, you're constantly with the opposite sex. So I think that could be a little difficult in the beginning for someone to understand. So I think so I think that once he understood everything and got to see everything, it's been smooth sailing for us. Not that he was like, you know, but I could tell that, you know, it does make someone uncomfortable to see the person that you love with, you know, someone else. It's not easy. I couldn't handle it. I'm an extremely possessive person, and I couldn't handle it. So hats off to all of our partners that put up with us. So I couldn't handle it. But after that, obviously with the kids and stuff, if he wasn't an amazing father, I wouldn't be able to be here. My mom, my sister, my mother-in-law, my sister-in-law, everybody, it literally is a village that helps me and takes care of my kids. So it's not just me doing everything. It's I have all these amazing people backing me. नीरू जी said she's possessive. सरताज जी, आप बताओ, आपको ऐसी अपने बारे में एक क्वालिटी क्या लगती है? मेरी क्वालिटी जो आपको शायद थोड़ी ऐसे ऑब्जेक्टिवली किसी को नापसंद हो सकती है, ऐसी कोई क्वालिटी? नहीं, नापसंद तो चलिए किसी को कुछ भी हो सकता है। इसमें ऑब्जेक्टिवली मेरी क्वालिटी जो मुझे सबसे बेहतरीन लगती है, आई एम अ वेरी एम्पैथेटिक पर्सन। मैं आपसे जो नहीं पसंद है वो पूछ रही हूँ, आप अपनी एम्पैथी बता रहे हो। that you don't like. Like I said, I'm brutally possessive to a point where I can. So you don't like this quality? No. So what's the question? Is the opposite? So she's asking you, like, what's one of your qualities that you don't like? No, that's what I'm asking you. You said you're brutally possessive. Yeah. So this I quality don't like you don't. it. So I just asked you. You said no, I like it. No, I don't like it. You don't like it. Yeah. Okay. So what is something you don't like about yourself? I'm too extremely sensitive. I'm not expressive. I'm not emotional, and I held things inside all the time, and that's probably is not very healthy psychologically. Do you cry? I rarely. Yeah. And if I remember, I don't know when I cried last time. So, but as I said, there are two types of people, probably actually 5 types of, as Freud explained, but mostly emotional and sensitive. So I'm the other one, sensitive, and that's most dangerous. Emotional are very much. Catharsis has been done, and we are okay. Let's fly. We laughed, we cried, we fought. This. That's okay. Move on. But these mind sort of they people, hold it in. Yes. It is very. That's why I think I'm a poet, because things happens to me, intermingle inside, and comes up with a beautiful sonata. Are you an emotional person or a sensitive person? I'm extremely sensitive. And I, again, have this problem where I seem very vocal about everything that I feel, but I'm just used to suppressing everything. Like, you will never know that I'm upset, angry, sad, or someone has hurt me. I'll never show it. I'll never give anyone, it's messed up, but I'll never give anyone that right to know how I'm feeling, that power over me. Which is so strange, because I'm sitting with 2 actors who are saying that in their real life, they are not expressive. One actor.
Yes, if you ask people at home, they'll say like anything. I'm very like, oh, it's okay. If anything happens, like, it's okay. Come on, let's get going. How are you feeling? I'm great. All good. What happened? Nothing happened. Let's do this. So very non-expressive. Why are you saying you're not an actor? आप I am एक्टिंग yet कर रहे हो not. ना? I am कर not तो yet. रहे हो। Probably this film will display. Of somehow. course, you're an actor. बन तो Thank you, हाँ? एक्टिंग कर ली तो बन गए एक्टर। कर ली बन गए नहीं, कबूल हो गई तो बन गए। कबूल तो हो गई ना। Okay. आप रिएक्शन देखते ही हो। जी। Kali Jota was a hit. Now we're doing हाँ। second film, so you're an actor. Oh yes. Of थोड़ा course. बहुत कम on that था, don't worry. That's why we took you on the second film. Yes. But it will show on 19th. Yeah, Yes, I'm that's sure. what I'm I'm saying. excited to watch the film. Are you really? Yeah, because I do can't watch see on your Punjabi face films. excitement. She's like us. She doesn't express. I'm also not expressive. You were just saying to say. I'm also sensitive. I'm just being. No, cheeky. I actually cry and release. I find it very easy to do. When I'm angry, also This I is cry. girlish thing. This is very obvious. Like majority of the girls do cry, and that's, Well, like, no, I'll go in the shower and do it. Like, I will go in the shower and I'll cry my eyes, I can't say whatever. I cry. And then I come out like, nothing happened. But then you feel like the releases happen. Yeah, I feel good. But it's nice to cry. Yeah, no, it's, oh, I it cry is with beautiful. myself It is beautiful. all the time. Yeah. There's this. Sorry. No, go ahead. ਸਾਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ this is the beauty of human race actually every species on planet earth probably ਸਾਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੁਣ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘਰ ਬਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ ਕਿ ਇਸੇ ਗੁਣ ਸਦਕਾ ਖੁਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ This is the Beautiful. beauty of a person if he or she can cry for somebody. Like, what else could you imagine? You know, on this day where we're sitting, what is the one thing that you aspire to have or that you would like to manifest if you believe in manifestation? Oh my gosh. Well, as of right now, this very second, that Shayad should be and will be a blockbuster. I'm just talking about this second. This second is what I'm thinking. Yeah. Shire is a blockbuster. Shire is a blockbuster? Obviously. Yes. Yes. Yes, it is. Blockbuster is what? Blockbuster. Blockbuster hit. I don't care about anything else. Okay. It is a hit. It's a hit. It is. It's which a is big hitting everybody. hit. It's a huge hit. It's a Huge huge hit. सारे records break कर दिए. Yes. है ना? Judd and Juliet records have also been broken. ब्रेक करती है या सरपास करती है कुछ भी करती है अच्छा करती है बेटर करती है ठीक है हाँ जी सारे रिकॉर्ड्स सरपास करती है हाँ. सबको अच्छी लगती है Oh, thank you guys. Thank you so much, audience. कि आपने किया साड़ी फिल्म का ना कली जोटा बोलो ना शायद नहीं बड़ी सक्सेस बनाई. I'm so grateful. Thank you, universe. Yeah. Manifestation हाँ. for today. अच्छा दिस इज द manifestation हाँ. ओके वो अच्छा present tense में बोलना हाँ. होता है ना? ओह अच्छा Like it's already happened. ओके Because they say that never when knew you यू वेरी when you spell it Understand. out, you cast a spell. It's like that. ओह अच्छा You would. I had written in my phone, remember, for Kali Jota. So I'd written, Kali Jota is going to be, it's a huge hit. Thank you so much. I had just done, Jet and Juliet 4, we just did. So before that, 6 months before, I said, oh, Jet and Juliet 4 releasing June 28th. And it's actually releasing on that day. And we had no planning of it, nothing. So I do very much That's an believe iconic in franchise that. as well. Yeah, it's coming in June. I love it. I absolutely love it. It's good fun. And it was, I think, my introduction to Punjabi cinema. Oh. Like, that's how I got introduced to it. Then I watched a lot bunch of movies your age after. people have been introduced Yeah. via that film. Yeah. And also, I think, like, the entire sort of Punjabi Canadian sort of vibe coming together Yeah. is also very, very In that film. interesting to But watch. in this, chalo, we'll talk about this one later. Yeah. But no, really, really excited to watch Shire. Any thoughts as you leave? I'm just very grateful. And honestly, I'm not lying. I really am so grateful that we had the opportunity to make this film. We had such an amazing team, each and every one of us. We all fight a lot also, but for the sake of the film. And I think what has happened,
was all worth it, and I'm just very grateful that this happened to me. कुछ तो अलग बोलो. I think she Oh, said ਤੁਸੀਂ it. ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ मैं ताही छुट्टी कुछ कर नहीं गया बोल ना नहीं मैं सीखूंगी ना, आप बोलो. तो मैं तो नहीं, ऐसे इन्होंने सारा सीखूं. कुछ बोल दिया वैसे. नहीं, आप उसको उर्दू में बोलो, अब जैसे आपने पहले बोला था. आप उर्दू में पूछिए. Persian बोलो. Just say something. करिए Oh कोशिश. God. मैं देता हूँ Now आपको I'm 60 stuck. सेकंड. हाँ जी. Oh. चलिए आप जाते जाते. हाँ. I can't help you. देख लो हाल दिल्ली वाले आप कौन सा ख्याल व्यक्त करना चाहेंगे? व्यक्ति संस्कृत but I anyway. know, whatever. Now this is the best I've got. Okay. क्या ख्याल रखना चाहूँगा जाते जाते जी. कुछ भी. ये जो फिल्म हमने की है शायर, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे अजीज़ दिल अफरोज़ फिल्म है, जिसका किरदार मेरे बहुत नज़दीक है. जैसी मेरी फितरत है, मिजाज है, वैसा ही ये किरदार था. तो अदाकारी में कुछ इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं आई. तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ नीरू बाजवा जी का, मुकम्मल सारी टीम का, डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, को एक्टर्स, सबका, कि उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से मेरे जैसे शख्स से अदाकारी निकलवा ली. तो अब आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि 19 अप्रैल को आप ज़रूर एक दफ़ा ये फ़िल्म देखें और जिस तरह के भी आपके ख़यालात हों वो हम तक पहुंचाएं. हमें बहुत खुशी होगी. Perfect. अच्छा, last question we ask all our guests quickly. How do you, Neeru ji, unwind after hours and how do you unwind after hours? I know आपने बोला है कि आप Netflix जब टाइम मिलता है तो देखते और सोते हो, पर उसके अलावा आप सोचो कि अभी सब खत्म हो गया, टूर खत्म हो गया, पिक्चर भी रिलीज होगी, अब क्या करोगे आप? पहले इनसे पूछ लीजिए, मैं कोई आइडिया लगा लूँगा ना. हाँ. मेरा तो ऑब्वियस है कि मैं घर पे हूँ, my 3 beautiful girls are sleeping, तो मैं नीचे आती हूँ and my husband makes me a nice cup of tea and I watch Netflix. Change We're कर sticking लेने to answer, tea. let's do that. People will send me to AAA, otherwise it's okay. Tea. Cha. No Pinot Grigio, Pinot Noir at this point. Okay, I know. Cha. हाँ जी. हाँ जी. Unwind after hours. अच्छा, मैं अगर पहाड़ों में जा सकूं, दरिया बहता हो तो बहुत ही उम्दा है, हरियाली हो, जंगल हो और 6 कॉटेजेस होते हैं वो हो, तो मैं इत्मीनान से कुछ ख़यालात सोच सकूं. मतलब कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही मुकम्मल तौर पर आप मुतमईन हो, फ्री हो, तो आई थिंक दैट वुड बी द मोस्ट अनवाइंडिंग थिंग फॉर मी. Lovely. Thank you both for your time. It was lovely chatting with Thank both of you. And I'm very excited to see the movie. I'm sure as is everybody else. Yes, I can see that. And now you can see my excitement. Yes, I can. Okay, great. But hopefully we'll catch up with you soon. Thank you so much. Thank It was you. fun.